Good morning, everyone. We have already done a major part of our chapter 4 of history, which is the Central Islamic land. And in this, we have done a lot about the political structure and the changes that came across the Islamic lands. हमने उसके बाद क्रूसेड्स वाला भी डिटेल में कर लिया है. उसके बाद we came across the economy, their commerce, agriculture, etc. And then we started with its learning and culture in our previous class, where we studied about the you can say the development that were taking place basically because they were coming in contact with so many people, so they were now wanting to know more about the world and the other things. उसके बाद शरिया क्या है, which is actually body of laws. उसके बाद कैसे कैसे जो we studied that 4 different schools of law आ गए थे मजहब, और depending upon who their the heads were preaching these. उसके बाद हमने देखा था जो questions है relating to the personal status were given very clearly, their decisions and their answers on certain questions were clearly written, whereas we will notice that on commercial matters and constitutional issues they were not that much clear. उसके बाद we also did about Quran, about the importance that it has, how it has different chapters included in it in descending order and what else is written in it and its importance and interpretations, etc. Now we move on and we continue with this topic only regarding the learning and the culture at this time. Here we will notice, as before winding up our last class we were on this topic, that Sharia before taking its final form, यानी जो टोटल शरिया एकदम कंप्लीट टोटली कंप्लीट होने से पहले क्या है, इसको बहुत ज्यादा एडजस्ट किया गया था इन अकाउंट ऑफ द कस्टमरी लॉज, यानी वहां से रिलेटेड जो स्टेट और पॉलिटिकल के जो सोशल ऑर्डर थे जिनको सियासा शरिया बोलते थे, उन सबको लेके थोड़े से चेंजेस आए थे शरिया में. और जो कस्टमरी लॉज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शरिया से शरिया के साथ मिला के फाइनल डिसीजन लिए जाते थे. जैसे कि दे हैव गिवन वन एग्जांपल अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ लैंड बाय डॉटर्स. तो अभी तक ये कस्टमरी लॉज जो है ना वो ज्यादा फॉलो होते थे. व्हाई? बिकॉज इट इज क्लियरली स्टेटेड कि रूलर या उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो डेली जो मैटर्स होते थे रिलेटेड टू स्टेट की सिक्योरिटी या बाकी जो चीजें हैं वो कोशिश करते थे पहले खुद ही डील कर ले. बट इफ अगर ऐसा होता था कि सॉल्व नहीं हो पाता था या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि we can say that it is a more something that has not been able to, the ruler or the his officers are not able to solve it, या कोई बहुत बड़ा सा मैटर है, तभी उन चीजों को काजी यानी कि जज के पास भेजा जाता था. और जो काजी हैं वो ऑब्वियसली अपॉइंट किए जाते थे स्टेट के थ्रू, और वो दे यूज्ड टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर, मतलब वो कोशिश करते थे डिस्प्यूट को सेटल करने की. ऐसा नहीं है कि भाई एकदम स्ट्रिक्ट एनफोर्सर थे कि जैसा बोला है ऐसा ही फॉलो होगा. वो कोशिश करते थे जनरली जो डिस्प्यूट्स हैं वो पहले सॉल्व हो जाए. अब एक और जो नई चीज इस टाइम अपने देखेंगे जो आई थी, दैट वाज अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल हु आर नोन एज सूफीज. ये जो सूफीज है they actually had, you can say, deeper interpretation of this spiritualism. इसका सिंपल मीनिंग में क्या बोले कि ये लोग है ना मिस्टिसिज्म, एस्टिसिज्म, ये सब क्या होता है कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन करते हो, बहुत ज्यादा आप बोलते हो कि मुझे अपने आप को जो है जो वर्ल्डली लेजर्स है या जो हम बोलेंगे कि इंडल्जेंसेस हैं, जो वर्ल्ड की जो लालच है या जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है जो लग्जरी जैसे है, इन सब चीजों को से खुद को क्या करना है, दूर करना है, खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है. और मेन हमारा काम क्या है कि डीपर और पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड, यानी हम गॉड को जाने, जो मेन हमारी पर्पस है लाइफ का कि गॉड जो है वो क्या चाहते हैं कि हम कैसी लाइफ जिए. और ऐसे था कि इसमें ये बोलते थे जितना आप
मतलब ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें है ना, इनसे जितना दूर जाओगे ना, आप उतना ही कहीं ना कहीं कहाँ पे यू विल बी मोर रिलेटेड टू द गॉड. इट इज जनरली यू कैन समवेयर कंपेयर इट टू मेनी ऑफ द रिलीजन्स. यही बोलते हैं कि अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा आपको गॉड की तरफ जाना है, आपको रिलीजियस ऐसी चीजें फॉलो करनी है, तो बोलते हैं ना आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी कि है ना, मतलब जो वर्ल्डली एक्टिविटीज है वो छोड़ो भाई, लेजरली जो एक्टिविटीज है, इतना बड़ा घर चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ियां चाहिए, ये सारी चीजें, और जो लाइफ एकदम जो इंजॉय करके जीते हैं, ये वाली चीजों से वो बोल रहे थे आप दूर रहो. तभी क्या होगा, और टोटली अपना जो टाइम है वो किसको डिवोट करो, गॉड को डिवोट करो. तभी क्या होगा, यू विल बी एक्चुअली समहाउ कनेक्टेड टू योर गॉड. अब ये यही इस चीज को बोल रहे थे कि जो अब मेनली जो इनका फोकस है वो मिस्टिसिज्म में आ गया था. मिस्टिसिज्म जैसे मॉन्कहुड होता है, एक तरीके से रिलीजियस वे होता है जिसमें हम रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड. जो बोलते हैं ना लोग कि हमने ये सब त्याग दिया है, वो दुनिया की मोह माया छोड़ दिया है, इस टाइप के जो आइडियोलॉजी थी वो आ रही थी कि इफ यू वांट टू बी really believer of God, you will have to leave these things and just devote your whole time towards love for God. फिर एक और यहाँ पे टर्म आया है पैंथेइज्म, मतलब बेसिकली आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड एंड हिज क्रिएशन, which implies human soul must be united with its maker. इस टाइम पे ना ये वाली आइडियोलॉजीज आने लग गई थी. यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स ही गॉड है, गॉड ने क्रिएट किया है यूनिवर्स. अगर हम टोटली डिवोटेड रहे टुवर्ड्स गॉड, we will be actually knowing him more and we will somehow later become his part. यानी अगर हम ऐसी लाइफ जिए विच इज फ्री ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटीज, कोई इंडल्जेंसेस नहीं है, कोई मतलब गलत आदतें नहीं है, एंड यू आर लिविंग अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ एंड यू आर डिवोटिंग योर होल लाइफ फॉर गॉड एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ लव एंड फेथ ऑन योर गॉड, देन ऑब्वियसली जो आपकी सोल है वो अल्टीमेटली किससे यूनाइट हो जाएगी, आपके सोल के मेकर से. और आपका सोल का मेकर ऑब्वियसली कौन है, गॉड है. So with this they have used this term, unity with God can be achieved through an intense love for God which they called as ishq. ठीक है, यानी this term actually is used for God, कि गॉड जो है, इफ यू आर टोटली इन्वॉल्व टुवर्ड्स अ ट्रू एंड अ पायस सेक्रेड, टोटली डिवोटेड, जो अगर आप भगवान की तरफ रहो टुवर्ड्स योर गॉड, स्पेसिफिकली अल्लाह, तो तब दे हैव यूज्ड दिस टर्म इश्क, व्हिच मींस यू आर टोटली अटैच्ड एंड ओनली टुवर्ड्स योर गॉड. Now this was actually given by a women saint of Basra who preached this in her poem. Then we have mention of one Iranian Sufi, और जो ये Iranian Sufi है was the first to teach importance of submerging the self in God. Again you will come across one more term which is fana. You must have heard this term earlier also, but यहाँ पे क्या है, इसको इस तरीके से यूज किया गया, मतलब आपने अपने आप को पूरा का पूरा किसको सरेंडर कर दिया है, गॉड को. So यहाँ पे ये जो terms which we use otherwise are actually used for God, and these shows actually that now people were moving towards only involving themselves directly to God, and somewhere कहीं कहीं जो basic हम बोलते हैं ना, ये ritual follow करो, वो ritual follow करो, उन पे फोकस नहीं करके ये मेनली बोल रहे थे कि हमें टोटली डिवोटेड होना चाहिए टुवर्ड्स आवर गॉड. इसमें एक और चीज है, म्यूजिकल कंसर्ट्स होते थे जिनको बोलते थे समा. तो ये जो है इससे भी योर इमोशंस ऑफ लव एंड पैशन वर शोड टू God. You must have heard about Sufi music. So if you hear them, you will find a certain kind of you can say involvement. ऐसा लगेगा you are actually experiencing some other world and you are totally involved with your God. तो ये वाली जो चीजें हैं ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है.
सूफिज्म जो है इट वाज ओपन टू ऑल रिलीजन, ऐसा नहीं है इट वाज ओनली फॉर द मुस्लिम्स, and it was regardless of any religious affiliation, your status or your gender. If you want to be part of it, you can. उसके बाद then we are telling about, we will see that certain changes came in regards to the religious ideology. अब इसमें they have mentioned about one person whose name is Dulnan Misri. Now his grave can still be seen near the pyramids in Egypt. He said before he declared that before the Abbasid Caliph, one of the Abbasid Caliph whose name was Al-Mutawakkil, that he has learned what true Islam is from an old lady and what true chivalry is from a water carrier, यानी अच्छा बिहेवियर, यानी जो हम बोल देते हैं जैसे शिष्टाचार, यानी ये असली बिहेवियर उन्होंने किससे सीखा, एक वाटर कैरियर से जो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। और ट्रू इस्लाम ऑब्वियसली विद सम ओल्ड लेडी जिन्होंने ऐसी बात की थी कि असली जो इस्लाम है व्हाट इज इट इज नॉट ओनली अबाउट being yourself or being मतलब kind of selfish but obviously helping others, और कैसे mainly आप totally you should be devoted to your God and you should just be showing all your emotions of love and passion for your God. Now by making this religion was becoming more powerful, कैसे, because it was becoming personal and less institutional, मतलब मुझे कहीं जाके पूजा नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिंपली क्या चीज है कि I will simply and very obviously what will I do, I will just try to be devoted to my God, और मुझे कोई एक ये नहीं है ये वाले पर्टिकुलर ऐसे ही करना है, यहाँ जाके ही करना है। इसीलिए सूफिज्म जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और जो मेजर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम वाले थे उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये हमें क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं बाय द कमिंग ऑफ दिस सूफिज्म। एक alternate vision of God and universe was also developed by few of the philosophers and scientists. अब एक और सेक्शन आएगा, ये जो हम बोलेंगे रिलीजियस हेड्स है या इस्लामिक फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट, वो लोग है ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब किस चीज से, ग्रीक के कल्चर से, ग्रीक के फिलॉसफी और साइंस से, और क्योंकि हम देखेंगे कि जो लेट ग्रीक कल्चर था ना अभी भी उसके कुछ रेमिनेंसेस, कुछ एविडेंसेस कल्चर के, उनकी साइंस के, वी कैन इजीली फाइंड देम इन द बाइजेंटाइन एंड द सैसनियन एम्पायर। तो जब हमें इतना मिल रहा है, these things we are easily available to us, दो हाँ स्लोली ऑब्वियसली वो खत्म हो रहे थे बिकॉज नया पूरा ये ग्रुप आ गया था इन पे रूल करने के लिए, बस दे वर स्टिल देयर। तो फिर कुछ हम बोलेंगे मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो स्टिल बिलीव कि अपने को पॉजिटिव चीजें बाकी जगह से भी लेनी चाहिए, तो इन लोगों ने फोकस किया जैसे इन स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सीरिया एंड मेसोपोटामिया व्हिच वाज वंस द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर। ग्रीक फिलॉसफी, मैथ्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन कि टेक्नोलॉजी वाइज ये लोग जो है ये लोग बहुत इंटेलिजेंट थे एंड दे वर आल्सो वर्किंग ऑन इट। तो ऑब्वियसली इन लोगों ने यानी उमाय्यद और अब्बासिड कैलिफेट्स जो हैं इन लोगों ने कुछ लोगों को हायर किया था सो दैट कमीशन यानी उनको काम दिया था टू ट्रांसलेट ग्रीक एंड सीरियाई बुक्स इनटू अरबिक, और काम किसको दिया, क्रिश्चियन स्कॉलर्स को, कि आप इनको ट्रांसलेट करके अरबिक में हमें दो। और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये हुआ था अंडर अल ममून, जिन्होंने लाइब्रेरी भी सेट की थी जो कि लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थी, जिसको बैत अल हिकमा भी बोलते हैं, बगदाद में। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स मिलके काम करते थे। किन किन के बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स थे, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे जैसे एरिस्टोटल और एल्गमेस जो थे, और ये जो थ्योरीज थी इन पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया था, और अटेंशन देके यानी दे वर फोकसिंग नाउ ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आल्सो, कि इस पे भी अपने रिसर्च करते हैं and we should also try to work in this sector so that we are also seeing some kind of progress in these sectors. They even actually
tried to study the Indian works on astronomy, maths, medicine. इनको भी इन लोगों ने Arabic में translate कर दिया था. And these works later reached Europe और उसके बाद philosophy में, science में, every section of the society was trying to do more research on it and study relating to it. Now they have told us that how an ideal student should be at that time, how he was expected to be an ideal student. So here they have mentioned us this one person's name whose name is Abd al-Latif, who was a 12th century लीगल एंड मेडिकल स्कॉलर. ठीक है, अब वो ये बोलते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए. Obviously, he should not learn his sciences from book unaided, even though he may trust his ability to understand. Okay, that means he should resort to teacher for each science, and if the teacher is limited in knowledge, take all that can be given by that teacher, and later you can move on to some other teacher for further knowledge. सिंपल मतलब क्या है, अगर तीनों 2-3 लाइंस को कंबाइन करें कि अगर आपके पास बुक है तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं अपने आप से पूरा जो है बुक पूरी की पूरी पढ़ लूंगा जो क्योंकि आई हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. बिकॉज ऑलवेज ट्राई टू गो टू अ टीचर फॉर हेल्प so that they can provide you the knowledge in correct way. And अगर आपको जितनी नॉलेज चाहिए, सपोज आप जिस टीचर के पास गए हो उनको उसकी लिमिटेड ही नॉलेज है, तो जितनी नॉलेज उनके पास है उतनी उनसे लो, फिर आगे फर्दर अगर आपको टाइम मिले तो और जो दूसरे टीचर्स है उनसे और नॉलेज. You should actually be a very good student. When you read the book, you should make effort to learn it and also master its meaning. And obviously you should always respect your teacher. You should read histories, you should read biographies and experiences of the nation. And obviously if you do these things, you will gather a lot of knowledge in terms of practical knowledge, मतलब biography or experiences of the life से. And it will be as tough in his short life space, यानी contemporary के हिसाब से, as I said कि आप जब ये सब पढ़ोगे experiences and biographies तो आपको बहुत ज़्यादा extra knowledge मिलेगी, which is a bit difficult if you only depend on your own experiences. So obviously you should always try to read such kind of books. And then obviously they said that you always try to understand the books or the things that you are going through, the works of the learned man. And still when you are going through certain books, try to read them very nicely, very cautiously, ध्यान से पढ़ो, avoiding haste, यानी बहुत जल्दबाजी में मत पढ़ो. ठीक है, so he said that you should go through them very nicely and then try to understand कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उससे क्या knowledge मिल सकती है. One more thing that he said was that you should not actually take the stress of study. बिकॉज ऐसे है कि आप जबरदस्ती इस हिसाब से पढ़ो कि बस मुझे पढ़ना है, जल्दी कंप्लीट करना है. तो हम जब स्ट्रेस में पढ़ते हैं ना, तो हम जो नॉलेज अटेन करने का जॉय होता है ना, उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज व्हाट ही सेड, दैट he who has not endured the stress of study, you should study it with lot of details. पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जल्दी में पढ़ रहे हो, बट इतने कंसंट्रेशन के साथ और इतने इम्पैक्ट के साथ पढ़ो that it causes stress to you. ठीक है, so as I said earlier, it was some kind of, you can say, a little bit of mistake. I am repeating it. You take the stress मतलब बहुत उसको इम्पोर्टेंस दे के पढ़ो, बहुत उस पर टाइम दो. ठीक है, नॉट स्ट्रेस आई मीन की टेंशन वैसे लेके, पर उसको इम्पोर्टेंस दे के इस तरीके से पढ़ो ताकि तुम्हें उसका ना रियल नॉलेज मिले. क्योंकि जब आप ऐसे उस पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के पढ़ोगे तो यू विल वांट टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ इट.
Okay, and then he finally said that read the biography of Prophet, follow his footsteps, obviously, because this is what is considered most important in Islam. Then he said that when somebody actually finishes his or her study, then obviously they should always then devote their time in mentioning God's name, singing his praises, and basically devoting his time in God itself. That means he was saying that just focus on your studies and try to understand all the aspects, whatever you study, with the help of the teacher. Study with great strength, study with great importance, and you can say also you can give lot of attention to whatever you are studying. And after you study, obviously always you should have God's name on your tongue, you should sing his praises, and you should not complain if the world turns it back on you, obviously. So learning leaves a trail and a scent of proclaiming its possessor. यानी अगर आप एक बार पढ़ लिए, you must have also noticed कि जब हम पढ़ लेते हैं कोई चीज तो हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है, और कहीं ना कहीं हम बोलते हैं, हम ऐसे जैसे बोलते हैं दैट पर्सन इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, मतलब उससे बात करो ना तो आपको पता चल जाता है। वैसे इन्होंने एक टर्म यूज की है सेंट। सेंट मतलब सम काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, हम बोल सकते हैं एक तरीके से वो उसको एडजेक्टिव की तरह या उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर आप पढ़ लिए हो तो आपके अंदर एक स्पेशल प्रोक्लेममेंट, आपने कुछ अचीव कर लिया, उसकी एक अलग ही फ्रेग्रेंस होती है, एक रे ऑफ लाइट होती है, ब्राइटनेस होती है दैट इज शाइनिंग ऑन हिम, and which will make you stand out from others. So this is what he considered as an ideal student, and this is what they focused when they talked about that how a student should study. So with this, now when we start our next class, we'll study that how coming of the new subjects will now promote critical inquiry. यानी intellectual field में भी अब क्या होगा, the students and the scholars will want to study more, and they will want to find out more questions which are unanswered or are answered very vaguely, and they will start now studying more, you can say finding out logical and rational meanings, and try to do critical inquiry about certain things which may not be clear to that particular scholar. And what then further changes it will lead in the kind of thinking and the learning of people who follow Islam. That is what we will do in our next class. So this is it for today, and I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. Now we'll meet in the next class.